गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसक्यूएल आइसोलेशन लेवल्स के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ एसक्यूएल आइसोलेशन लेवल्स के बारे में। सो इन द वर्ल्ड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ड्यूरिंग कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन इज पैरामाउंट। एसक्यूएल आइसोलेशन लेवल्स प्रोवाइड a mechanism to control the degree to which transactions are isolated from one another. So this presentation explores the various SQL isolation levels, their characteristics, trade-offs and practical implications for application behavior and potential anomalies. Understanding these concepts is crucial for balancing concurrency and data accuracy in database systems. Okay? तो सबसे पहले हम अनकमिटेड वाइल्ड वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? रीड अनकमिटेड इज द लोएस्ट आइसोलेशन लेवल। अनकमिटेड जो है वो लोएस्ट आइसोलेशन लेवल है, अलाउइंग ट्रांजैक्शंस टू रीड अनकमिटेड चेंजेस मेड बाय अदर ट्रांजैक्शन लीडिंग टू डर्टी रीड्स। एग्जाम्पल के लिए ट्रांजैक्शन ए अपडेट अ रो बट हैजंट कमिटेड, की ट्रांजैक्शन हुई थी बट कमिट नहीं हुई। सो ट्रांजैक्शन बी reads the uncommitted data. If transaction A rolls back, transaction B now has invalid data. Use cases suited for reporting systems where real time data is prioritized over absolute accuracy, tolerating potential inconsistencies. तो कब इसको यूज करना है? इस केस पर पोटेंशियल इश्यूज क्या आ जाते हैं? सब्जेक्ट टू डर्टी रीड्स, नॉन रिपीटेबल रीड्स एंड फैंटम रीड्स, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस. Read committed. Read committed means description. Transactions can only read that has been committed by other transaction. ऐसी transactions जो सिर्फ read की जा सकती है कि ये वाली जो transaction है किसी और ने commit की हुई है. Preventing dirty reads and enhancing data consistency. Example के लिए देखेंगे, जब transaction A update करती है एक row को but वो commit नहीं होती, तो transaction B try करती है उसको read करने के लिए but वो committed value नहीं होती. Default value. It is the most common default isolation level in many database systems, including PostgreSQL, due to its balance of consistency and concurrency. इसका जो potential issue आता है, while preventing dirty reads, it is still susceptible to non-repeatable reads and phantom reads requiring careful considerations in certain scenarios. Repeatable reads. Consistent snapshots. कंसिस्टेंट स्नैपशॉट्स का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन सी अ कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ensuring that data read remain unchanged throughout its duration. Prevention, it prevents both dirty reads and non-repeatable reads, enhancing data integrity within the scope of a single transaction. Implementation often involves locking or versioning mechanism, adding overhead but ensuring consistency. Potential issues: still vulnerable to phantom reads which can occur when new rows are inserted or deleted during the transaction. So potential issues क्या है? Still vulnerable to phantom reads which can occur when new rows are inserted or deleted during the transactions. Serializable, the fortress of isolation. The highest isolation level where transactions are completely isolated from each other, executing as if they were running in isolation one after the another. Prevention, it prevents dirty reads, non-repeatable reads and phantom reads, guaranteeing maximum data consistency. Implementation, typically implemented using strict locking or two-phase locking, ensuring that no concurrent modifications can interfere with the transaction. Performance impact, significantly reduces concurrency due to increased locking, potentially impacting performance in high traffic scenarios. Non-repeatable reads. It occurs when a transaction reads the same row twice but gets different values because another transaction has updated and committed the row in between. Example के लिए transaction A reads a row, transaction B updates and commits that row. Transaction A rereads the row and sees the updated value. Impact can lead to inconsistencies and incorrect results if not properly managed, requiring careful considerations in critical applications. Prevention, it prevented by repeatable read and serializable isolation levels which ensure that transactions see a consistent snapshot of data. Phantom reads occur when a transaction executes a query multiple times and sees different sets of rows because another transaction has inserted or deleted rows in between. Transaction A executes a query that returns a set of row. Transaction B inserts a new row that matches the query criteria and commits. Transaction A re-executes the query and sees the new row phantom.
can disrupt data aggregation and reporting processes if not adequately addressed, leading to inaccurate insights, and it prevented by serializable isolation level. उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में अगर हम देखेंगे, ट्रेड ऑफ कर देते हैं फाइंडिंग द बैलेंस. सो चूजिंग द राइट आइसोलेशन लेवल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट कि आप क्या यूज कर रहे हैं. बैलेंसिंग कंकरेंसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी. रिस्क टॉलरेंस, कंसिडर द रीड एंड राइट रेशियो, ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन एंड एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी व्हेन सेलेक्टिंग एन आइसोलेशन लेवल. बेंचमार्किंग डिफरेंट आइसोलेशन लेवल्स एंड रियलिस्टिक वर्कलोड्स इज क्रूशियल फॉर assessing performance and identifying potential bottlenecks. Higher isolation level reduce concurrency but increase data consistency, while lower isolation level increases concurrency but may lead to data anomalies. The performance considerations is locking, overhead, versioning, deadlocks, and monitoring and tuning. Higher isolation level require more locking, leading to contention and reduced throughput, impacting overall performance. Some database use multi-version concurrency to improve concurrency at higher isolation level. Increased logging can lead to deadlocks, requiring deadlock detection and resolution mechanism to prevent system stalls. Monitoring and tuning. Regularly monitor database performance and adjust isolation levels as needed to maintain an optimal efficiency. So ये था आज की क्लास का टॉपिक जिसमें हमने देखा SQL isolation levels. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.